Hello everyone, welcome to Control Systems lecture. In the previous lecture I discussed about transient response and steady state response, the brief introduction of that, and we also took this example where we discussed about which part of the system is responsible for transient response and which is responsible for the steady state response. So we found out that the inputs pole is actually responsible for the steady state part of the control system, and the pole of the transfer function is responsible for the transient part for any system, and both the pole and zero are responsible for the amplitude portion of any control system. Let us take another example so that it becomes clear to you. Suppose we are having any control system, okay, with we can take any transfer function for this control system. So we have input rs, we have the output as cs, and the transfer function, let us define it as s plus 1 divided by s plus 2 multiplied by s plus 3 multiplied by s plus 4. Suppose this is the transfer function gs of the control system, the overall transfer function of the control system. Now from here we can also see that gs, the transfer function, is defined as output by input, hence we can write cs as equal to gs multiplied by rs. So if I write cs is equal to gs multiplied by rs, we need some input rs. Let us suppose take rs as equal to step input, okay, unit step input 1 by s. So this is going to be rs 1 by s multiplied by the complete gs term, that is s plus 1 divided by s plus 2 into s plus 3 into s plus 4. Now we are just going to do the inspection of it, we are not going to completely solve it. This type of expression, whenever you have multiplications in the denominator, then when if you want to find the response of the system in time domain, then you have to have the individual parts for this complete control system, and that can be done using partial fraction. So you have to use partial fraction method. In partial fraction method, you can see over here you have got 4 parts in the denominator, hence I can write it as a divided by s, plus we can write b divided by s plus 2, plus c divided by s plus 3, plus d divided by s plus 4. Okay, and this, of course, the values of a, b, c and d, they can be eventually found out. For to find the value of a, suppose you want to find the value of a, then you have to take this denominator that you are taking, s is equal to 0, hide this s from this part and put s is equal to 0 in the complete portion. So if you keep s is equal to 0, numerator will become 1, denominator will be the product of 2 into 3 into 4. So whatever value that you get, that will be the value of a. Similarly, for value of b, you have to keep s is equal to minus 2, substitute it in this complete term, hiding this s plus 2, hence you will get b, c and d. So you can find out what are the values of a, b, c and d. But for now, let's just right now we are not going to solve it completely because that's not required right now. I am just going to illustrate that what is going to be if I want to find out the time response of this system, the output time response, then what is going to be it. So we have a divided by s over here. The Laplace inverse, if whatever value of a, suppose take it as k1, we are having the value as k1, it's some constant, so it will be k1. 1 by s, the Laplace inverse of 1 by s is ut, so k1 multiplied by ut, okay, plus again you'll get some value of b. Let us take that value as equal to k2, so k2 is some constant. Laplace inverse of 1 by s plus 2, it's going to be
e to the power minus 2t. So again, yes, you can write ut over here. Okay, that's understood. Then here c divided by s plus 3, let us take that constant as k3, e to the power minus 3t ut, and plus d divided by s plus 4, Laplace inverse of this, we can take it as k4, e to the power minus 4t ut. So this is going to be the equation, the output response of the system in terms of in time domain. This was in Laplace domain, this thing was in Laplace domain, but this thing we are getting in the time domain. Now we have to actually analyze that which of these portions are going to remain in the system and which is going to the portion that remains throughout the system will be known as the steady state part, and the portions which are vanishing we can call them as the transient part. Transient part is that part which vanishes after some time. Okay, it stays for a while but after some time it should vanish, so that will be the transient part. Other parts are going to be the steady state part. So you can see that we have got three terms over here. These three terms, e to the power minus 2t, 3t and minus 4t, these are exponentially decaying terms. So we'll be getting three graphs, e to the power minus 2t, then we'll have e to the power minus 3t, and then we can have the next graph as e to the power minus 4ct. All these values are going to become 0 at t tending to infinite. T tending to infinite, this means that the system is reaching its steady state value. So these three values are going to become 0 at t tending to infinite. Hence we can call these three parts will be called as the transient part of the system. And you can see here we have the first part, that is k1 into ut. K1 into ut means some constant multiplied by unit step function, and unit step function is defined from 0 to infinite. Okay, so this portion is going to stay. So this portion we can call it as the steady state part of the system. Again, this can be we can emphasize again that this k1 into ut, it was actually, we derived it from a divided by s, and this s, here we got this pole s from where? We got it from the input was 1 by s. From here only we got this k1 into ut. Okay, hence again we can re-justify it that the inputs pole is actually always responsible for forced response of the system, and the poles of the system, that is the control system that you have, the poles of the transfer function, they will be actually responsible for the transient portion. They will be responsible for the natural response of the system. Okay, so this is how you can visually inspect any control system, what is going to be. You can actually if you have this kind of system, if you are having this kind of system, then no need to completely solve it. Even by visualizing it, you can understand that what kind of response is going to be there in the system. So you will have to add these three portions. So one is your steady state response, and we have got three transient response. The addition of all these four quantities will give you the final value. The final output response can be it can be visualized from here only. Okay, so I hope it's clear. Let's move forward. Now whenever you are going to talk about the time response analysis, whenever we talk about control systems and we have to analyze those systems, then one thing is to be taken care of. Like if you have any control system, if you are having any control system, okay,
with the transfer function gs, and you want that the output should behave in certain way when you apply certain input rs. Okay, any control system, it will work properly only if the output that we are getting is near about the desired output that you want to have. Now this output has to be defined, means it's ये क्या होना चाहिए, system को कैसे behave करना चाहिए, that is almost that is known to the engineer. But आप इनपुट क्या क्या अप्लाई करेंगे या कोई कंट्रोल सिस्टम है उसमें किस तरीके के इनपुट आएंगे, दैट इज़ नॉट known actually in many of the cases. The input signal is actually random in nature until unless you have certain system जिसमें एक ही specialized input जाता है तो वो अलग बात है, but otherwise the inputs are not known ahead of the time. So how to analyze any system? You have जैसे आपको suppose कुछ डिज़ाइन करना था, आपको कोई कंट्रोल सिस्टम बनाना था विच शुड वर्क इन अ सर्टेन वे, and then you don't know that what are going to be the inputs to the system, but you want to analyze that whether the output that you are getting is correct or not, means whether the system is working properly or not, that you have to analyze previously only. Then what can we do when you don't know the inputs? Hence what we do, we actually for analyzing we use certain test signals. We are going to use certain test signals, and these test signals are going to be the standard test signals. Using them the mathematical and experiment analysis is carried out. Now again the question comes that for any system कौन सा टेस्ट सिग्नल आपको अप्लाई करना है. ओके, विच टेस्ट सिग्नल हैव टू बी अप्लाइड फॉर द कंट्रोल सिस्टम. क्या हमारे पास बहुत सारे, क्योंकि टेस्ट सिग्नल आप कई सारे तरीके के डिफाइन कर सकते हैं. यू कैन हैव यूनिट स्टेप, यू कैन हैव यूनिट रैम्प, okay, you can have step signal, you can have ramp signal, then you'll study that we have parabolic signals, then we'll study that we also have sinusoidal signals, cos signals. These are the test signals. We'll study about impulse signal. These are all the test signals that you can have. Now do we have to apply all these signals for certain kind of control system to analyze? So actually it depends what kind of system are you having. It will be known that whether the system इज़ जैसे कोई भी आपके पास सिस्टम है, उस सिस्टम में किस तरीके के सिग्नल ज़्यादातर आएंगे ये आप डिटरमाइन कर सकते हैं. देयर कैन बी सर्टेन सिस्टम्स जहाँ पे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इम्पल्स आने के चांसेस हों, तो ऐसे सिस्टम को डेफिनेटली आपको इम्पल्स टाइप का इनपुट अप्लाई करके देखना चाहिए. देन देयर कैन बी सर्टेन सिस्टम्स विच विल बी सब्जेक्टेड टू सडन डिस्टर्बेंसेस. अचानक से कुछ डिस्टर्बेंस आया, फिर वो स्टेबल रहा. देन फॉर दैट काइंड ऑफ सिस्टम यू कैन यूज स्टेप रिस्पॉन्स, स्टेप इनपुट. सर्टेन सिस्टम्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे हो सकता है कि आपका जो सिग्नल है वो ग्रेजुअली टाइम के साथ चेंज होगा. फॉर दो सिस्टम्स यू कैन यूज रैम्प सिग्नल, रैम्प इनपुट. Okay, so depending on the type of control system, this all depends कि आप किस तरीके का सिस्टम बना रहे हैं, वो कहाँ पे आप डिप्लॉय करने वाले हैं, and wherever it is going to be deployed, then there only you can say that what kind of signals is the system more prone to. Depending on that you will be experimenting with the system. So we here we are just going to understand the major standard test signals that we have in this system we will be using. So first one is unit impulse signal. We use unit impulse signal. Unit impulse signal is unit impulse signal is actually written as del t, and it is defined as del t is equal to 0 for t not equal to 0. Means for every value of t,
if this is 0, then for every value of t which is not equal to 0, the del t graph, this signal is going to be 0, and del t is equal to the integration from 0 minus to 0 plus, like from only for only this, the integration of del t is going to be 1. that means the area for इंटीग्रेशन का क्या मतलब है कि हम एरिया डिफाइन कर रहे हैं. सो द एरिया ऑफ दिस del t is going to be 1 for t equal to 0, and the Laplace transform of it is 1. So for unit impulse signal, if you del t का आपको Laplace inverse करना रहता है, sorry Laplace transform करना रहता है, तो Laplace transform of del t this is equal to 1. Okay, so del t is defined as the area at t equal to 0, it should be equal to 1, then that kind of signal will be known as your unit impulse signal. Next standard signal that we use is unit step signal. For unit step signal, it is defined as ut equal to 1 for t greater than or equal to 0. So from t equal to 0 and after this complete portion for t greater than 0, ठीक है, 0 के बाद जितना भी portion है, for that this unit impulse response unit step unit use कर रहे हैं, इसका मतलब है कि value हो जाएगी 1. So for this complete portion this value is going to be 1 and it's going to be 0 before t equal to 0, मतलब 0 से पहले के पूरा टाइम पीरियड में इसकी वैल्यू 0 रहेगी. आफ्टर 0 the value of this ut is going to be 1 and the Laplace transform of ut is written as 1 by s. Next test signal is unit ramp signal. Unit ramp signal is defined as rt equal to t. अब इसका क्या मतलब है, जैसे if we are saying that t equal to 0 तो rt की वैल्यू होगी 0. Then if we say that t equal to 1 then rt's value is going to 1. If t equal to 2 then rt's value is going to be 2. Okay, इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 यहाँ पे 2. So for every value of t what टाइम की जो भी वैल्यू है rt सेम वैल्यू लेता जाएगा. तो अगर इसको प्लॉट करते जाएंगे, इसको जैसे जैसे आप प्लॉट करते जाओगे for t equal to 3 the value of rt is going to be 3. So if you plot it then you will get this straight line. Okay, and hence rt is equal to t for t greater than equal to 0 and it is equal to 0 for t less than equal to less than 0, and the Laplace transform of rt is written as 1 by s square. Next important signal is unit parabolic signal, and unit parabolic signal is defined as t square divided by 2 for t greater than equal to 0 and it's equal to 0 for t less than 0. So if इसको अगर आप प्लॉट करेंगे तो ये पैराबोलिक फंक्शन जो है ये इस तरीके का ग्राफ आता है. Okay, and the Laplace transform of t square by 2, if you solve it then you will get Laplace transform as equal to 2 upon s cube. So this is unit parabolic signal. Then we also have sinusoidal signals that we use as test signals, but when we'll be dealing with frequency domain analysis then I'll tell you about that test signal. One more very important thing, very basic thing that you must know is that these all test signals, they are related. And how are they related? So if you integrate, I defined unit impulse function as, हमने यूनिट इम्पल्स फंक्शन को डिफाइन किया था कि एट t इक्वल टू 0 जो इंटीग्रेशन ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन है दैट शुड बी इक्वल टू 1. नाउ इफ आई इंटीग्रेट दिस यूनिट इम्पल्स फंक्शन, ये जो फंक्शन है इसका अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है कि आप इसको ऐड करते जाएंगे. अगर आप इसको ऐड करते जाएंगे then the function that you will get over here, the integration of unit impulse function will give you step input. Okay, unit impulse function को आप ऐड करते जाओगे 0 से लेके t तक, तो आप हर पॉइंट में आप देखोगे कि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है. ठीक है, अगर इस पूरे चीज़ को ऐड करोगे, इफ़ यू इंटीग्रेट यूनिट इम्पल्स फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी योर यूनिट स्टेप इनपुट.
सिमिलरली यूनिट स्टेप इनपुट आप कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे, ठीक है, दिस इज योर यूनिट स्टेप फंक्शन यू टी, ओके, एट टी इक्वल टू ज़ीरो इसकी वैल्यू है ज़ीरो, फिर जैसे जैसे टी की वैल्यू बढ़ती जा रही है हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू है वन, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो टू टी हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू हमने क्या कही कि ये वन है, ठीक है। अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, इफ़ यू इंटीग्रेट यू टी, देन जैसे आपका ज़ीरो पे वैल्यू है ज़ीरो, ठीक है, वन पे वैल्यू, अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे मतलब आप इस चीज़ का पूरा आपको एरिया लेना है और आप एक्चुअल में ऐड करते जाइए। तो आप जब जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे यू विल फाइंड दैट इफ़ यू इंटीग्रेट दिस देन द इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल गिव यू रैम्प फंक्शन, ज़ीरो पे ज़ीरो, फिर वन में वन और ऐड किया तो टू, फिर टू में वन और ऐड किया तो थ्री, थ्री में वन और ऐड किया तो फोर। तो ऐसे करके अगर आप इसको इंटीग्रेट करते जाओगे, इफ़ यू इंटीग्रेट यू टी देन द आउटपुट दैट यू विल बी गेटिंग विल बी योर रैम्प फंक्शन। एंड सिमिलरली अगर रैम्प फंक्शन को आप इंटीग्रेट करोगे, इफ़ यू टेक द एरिया ऑफ इट, देन द फंक्शन दैट यू विल बी गेटिंग इज पैराबोलिक फंक्शन। सिमिलरली इसका रिवर्स भी सेम है, रिवर्स भी पॉसिबल है। जैसे यूनिट रैम्प हमने ये देखा, यूनिट रैम्प ये फंक्शन है, ठीक है, इसको ऐसे डिफाइन किए, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओके। इफ़ यू डिफ्रेंशिएट करने का मतलब क्या है, टू फाइंड द स्लोप ऑफ एनी सिग्नल। So if you want to find the slope of this signal, इस पूरे सिग्नल का अगर आप स्लोप फाइंड करेंगे तो क्या दिखाई देगा कि यहाँ पे पूरा स्लोप जो है इसका हर पॉइंट पे स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। Hence if you differentiate रैम्प सिग्नल you will get finally कांस्टेंट का मतलब इस तरीके की लाइन कांस्टेंट वैल्यू। So if you differentiate a ramp signal you will get UT signal, that is unit step। एंड सेम थिंग यहाँ पे ये आपका UT है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अगर आप इसका स्लोप निकालेंगे, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, यहाँ पे देखेंगे स्लोप है, ठीक है, इस केस में देखेंगे कि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का आप स्लोप अगर निकालोगे तो क्या आता है, फॉर कांस्टेंट इफ़ यू फाइंड द स्लोप इट विल बी इम्पल्स एंड दैट्स इट। So the differentiation of UT will give you impulse, differentiation of unit ramp will give you unit step, differentiation of unit parabolic will give you unit ramp. So this relation it's very basic, बहुत ही basic चीज़ है और ये पता होनी चाहिए, okay। Now moving forward, now we are going to do the actual time response analysis of any first order system, the generalized analysis we are going to discuss for any first order system. So let me first of all tell you, here you can see that हम word use कर रहे हैं order। तो order क्या होता है, कोई भी system का, कोई भी आपका system है उसका जो highest power है s का, जो आपके पास denominator आएगा, कोई भी system है उसका आपके पास denominator है, ठीक है, सिस्टम मीन्स कंट्रोल सिस्टम, तो इसका आप ट्रांसफर फंक्शन लेंगे। ट्रांसफर फंक्शन में डिनोमिनेटर जैसे सपोज एस क्यूब प्लस एस प्लस वन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द सिस्टम विल बी डिफाइंड एज हाईएस्ट पावर ऑफ एस इन द सिस्टम्स ट्रांसफर फंक्शन डिनोमिनेटर। सो हाईएस्ट पावर ऑफ एस क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ एस यू कैन सी इट्स 3, okay। So the order of this system can be written as 3। So when I am saying that we want to find out the time response of first order system, that means the transfer functions highest power of s, the denominator में जो highest power of s वो क्या होनी चाहिए, that highest power should be equal to 1, then we call it as first order system। So here we have made a first order system, यहाँ पे first order system बना के रखा है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, ये कैसे बोल सकते हैं, हाउ कैन वी से इट, जस्ट फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ इट। सो यू कैन सी दिस इज GS, फॉरवर्ड पाथ गेन, एंड रिवर्स पाथ या फीडबैक पाथ में कुछ भी नहीं है, तो यू कॉल इट एज यूनिटी फीडबैक पाथ, ओके।
you call this system as unitive feedback system. फीडबैक है लेकिन उसका जो गेन है वो कुछ नहीं लिखा है, मतलब वी टेक इट एज यूनिटी, सो इट विल बी टेकन एज 1. इफ़ यू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस, ठीक है, ये फीडबैक है तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, जी एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एस मल्टीप्लाइड बाय एच एस. ठीक है, जी एस की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाय टाउ एस. this is the tau, this is actually the time constant. I am going to elaborate it further. So this will be gs 1 by tau s divided by 1 plus gs again 1 divided by tau s multiplied by hs. ss की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं लिखे हैं तो वी आर टेकिंग इट एज, जब कुछ नहीं है इट मीन्स दैट इट इज़ यूनिटी फीडबैक सिस्टम. इसको सॉल्व करोगे तो जीएस की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से टाउ एस कॉमन ले लेना, यहाँ पे टाउ एस आ जाएगा. सो इट विल टाउ एस नीचे से डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएंगे. सो जीएस यू विल गेट एज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टाउ एस. और फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट द हाईएस्ट पावर ऑफ एस इज एक्चुअली 1. यहाँ पे एस स्क्वायर का टर्म नहीं आ रहा है, एस क्यूब का टर्म नहीं आ रहा है, तो हाईएस्ट पावर क्या है एस की, यहाँ पे 1 है. सो वी कॉल दिस सिस्टम एज फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. ये जो आपका सिस्टम है, ये आपका जो कंप्लीट सिस्टम कंट्रोल सिस्टम दिख रहा है, दिस इज़ योर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. ओके, दिस इज़ अ सिस्टम दैट यू हैव डिज़ाइन. सपोज यू आर द कंट्रोल इंजीनियर और आपको फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम डिज़ाइन करने बोले थे, आपने ये डिज़ाइन कर लिया है. ठीक है, अब आपको इस सिस्टम को चेक करना है कि ये टाइम के साथ कैसे कैसे वेरी करेगा, इसका टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस निकालना है आपको. ठीक है, यू हैव टू चेक द आउटपुट ऑफ इट. देन अगेन लाइक आई सेड दैट इनपुट्स आर नॉट यूनिक. ठीक है, हो सकता है कि किसी भी तरीके की इनपुट आए. सो फॉर दैट केस वी आर नॉट गोइंग टू टेक एवरी पॉसिबल इनपुट, वी आर गोइंग टू चेक द टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस यूजिंग द स्टैंडर्ड इनपुट्स दैट वी नो. So the standard input that we know, we'll check it through it. So first input that we are going to take is step input. Unit step input मतलब UT. हम पहला input जो लेंगे वो लेंगे UT.